ପାଞ୍ଚ ଏଇଟା ଅଏଲ ପେପର ନର୍ମାଲ ଅଏଲ ପେପର ମୋଟା ମୋଟା ହେଇଥିବ ବୁଝିନା ତାଠୁ ଟିକି ବନଉଥିଲେ। गुड मॉर्निंग ऑल सो स्टार्ट करिया हमर दीटा पार्ट बाकी थला यूरो कंजुगेटेड डाइन देखिबा केमती यूवी स्पेक्ट्रा कोन ट्रांजिशन होची आ गोटे हमर रहिची कार्बोनिल कंपाउंड्स दीटा जिंस तमर अछि कंजुगेटेड डाइन एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स एरा डिस्कस करले हमर सब कोर्स सरजियो एंड देन प्रॉब्लम पार्ट त माने पीडीएफ वाइज गोटे पीडीएफ पढा ता खातार लेखिकी कोडा बुझ पारछो कोडा करि पारनो डाउट हो मत कहीले मुझे एकाधर सब बुझेदेवी प्रोब्लेम गुड़ा तो स्टार्ट करवा यूवी स्पेक्ट्रा तुम के मन थी जानी बहुत दिन आगे पढ़ी सो यूवी स्पेक्ट्रा जनरली देखा आम फास्ट गोटे डाइन नवा सिंपल गोटे आल्किन नवा गोटे आल्किन तुम जो क्वेश्चन आसो कौ टाइप ट्रांजिशन हुए गोटे आल्किन कौ टाइप ट्रांजिशन हुए से कहले आम नेक्स्ट बुझा कंजुगेट डाइन कौन होची कहार इफेक्ट कौन रहिबो नेक्स्ट टाइम पर बुझा तो फास्ट क्वेश्चन होची व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजिशन यू विल ऑब्जर्व इन सिंपल आल्किन गोटे आल्किन ने को टाइप रो ट्रांजिशन तमे ऑब्जर्व करियो आंसर दियो तुम माने फर्स्ट आल्किन माने कोन पाई बॉन्ड अछि तो गेस करी को ट्रांजिशन आसीबो आ ता भीतर कोटा एक्चुअली मेन ट्रांजिशन और व्हिच वन इज इंटेंस ट्रांजिशन पाई स्टर जंक्शन आसीबो ता सहित आ पास करिवो हमरो सिग्मा पाई स्टर आसपेरियो बट हमर मेजर सबुट मेजर ट्रांजिशन यूवी स्पेक्ट्रा होची पाई स्टर ट्रांजिशन सो पाई स्टर ट्रांजिशन हला मेजर ट्रांजिशन सेति पई जो कंपाउंड माने यूवी स्पेक्ट्रा रे कलर एक्सिबिट करिवे जो वेवलेंथ सन शो करिवे ड्यू टू पाई स्टर ट्रांजिशन सो दिस इज द बेसिक थिंग तो से आल्किन देखा इथिन तुम देखु पिक गोटे एग्जांपल तुम नोट जो पठे आ किसी तीन एग्जांपल ऐड कर पठेबी मुझे मिस कर जाए पठेबी तुम जनरल इथिन जो नबा देखा इथिन आम ऑब्जर्व करुचे नियरली केते नियरली 170 नानोमीटर रे गोटे इथिन इथिन गोटे पाइबन अच्छी CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन ऑब्जर्व करुचे जनरली 170 नानोमीटर सो देन इफेक्ट ऑफ हमर कंजुगेट डाइन तो कंजुगेशन बढ़िले मेन हमर एठी डिस्कशन पॉइंट होची कंजुगेशन बढ़िले डाइन ऊपर कोन तार इफेक्ट रहिबो और कंजुगेशन बढ़िले पर्टिकुलरली हम यूवी स्पेक्ट्रा जिबा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन ऑन यूवी ऑब्जर्वेशन जो अल्ट्रावायलेट जो ऑब्जर्व करूची सो वेवलेंथ रा शॉर्ट वेवलेंथ जिबो कि लॉन्गर जिबो वेवलेंथ को तो लॉन्गर वेवलेंथ शिफ्ट ले नो तो कोन को जाय को शिफ्ट हम पढिथिले चारटा तो पढिथिली रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट नहीं बाथोक्रोमिक हिप्सोक्रोमिक आउ कोन पढाइतिला हाइपरक्रोमिक आउ हाइपोक्रोमिक चारटा पढिथिले दीटा थिला कोन दीटा थिला वेवलेंथ रिलेटेड माने वेवलेंथ रा लॉन्गर हेले गोटे ना हम कहउथिले ता ना गोटे अलगा थिला वेवलेंथ कमुथिले आ गोटे ना दउथिले आ गोटे जो दीटा थिला इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी केते इंटेंसिटी कार इंटेंसिटी कमिले गोटे शिफ्ट ते ना दिया होतला आ बढ़िले आ गोटे ना हम दउथिले सो मते फर्स्ट को इंटेंसिटी जदी वेवलेंथ रा बढ़िबो जति की वेवलेंथ से ऑब्जर्व करथबो और अधिक वेवलेंथ रे ऑब्जर्व करिवो दैट मींस वेवलेंथ बढ़िबो माने एनर्जी कमिवो लो एनर्जी ट्रांजिशन हबो और हाई वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ हबो रेड शिफ्ट यस ताको रेड शिफ्ट करिया करेक्ट एंड एनर्जी जदी कमिवो वेवलेंथ डिक्रीज हबो दैट मींस हाई एनर्जी जदी ट्रांजिशन हला तापर कहउछन ब्लू शिफ्ट एंड देन इंटेंसिटी सेंत कोन कहबा जदी इंटेंसिटी अधिक हला ट्रांजिशन त कोन कहला होची को शिफ्ट इंटेंसिटी अधिक हो तो कौन कहुच्छी हाइपरक्रोमिक एंड कमिले हूँ हाइपोक्रोमिक सो यदि तुम मैंने ऑलरेडी क्लियर अच्छ ताल आम मेजर आम देखिले कौन पाइपाइट ट्रांजिशन गोटे आल्किन होची पाइपाइट स्टार ट्रांजिशन जनरली आम कोठी होची आल्किन पाइपाइट ट्रांजिशन होची सो जो गोटे सिंपल आल्किन पाइपाइट स्टार ट्रांजिशन होची
जदि आम कंजुगेसन बढ़े दबा और आउ गोटे आल्किन यूनिट अच्छी आउ गोटे आल्किन यूनिट जॉइन करते सपोज इथिन नहीं इथिन गोटे यूनिट आम आउ गोटे इथिन नहीं गले कौन हो ब्यूटान ब्यूटाडाइन और ब्यूटेन 1,3 डाइन नहीं दीटा नहीं गले इथिन यूनिट जॉइन कर दे दैट बिकम्स ब्यूटाडाइन दीटा इथिन यूनिट मिसिले आम कौन पाइबा गोटे ब्यूटाडाइन पाइबा सो क्वेश्चन आछी जे नॉर्मल इथिन ने जा होतला कंजुगेशन पर तार कौन इफेक्ट हो तो से इफेक्ट बुझियो गेले एक्चुअली वी नीड एमो डायग्राम आम दरकार कारण मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जदि कि चेंज चांज होतबो एनर्जी कम होतबो कि बढ़ुतबो देन आमे कहि परिबा नेचर ऑफ ट्रांजिशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माने बिना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तुम कहि परिबन ट्रांजिशन ता कोन हबो कोन नाही सो मैं देखुले इथिन इथिन केस रे जो हमर पाई बॉन्ड थिला दीटा कार्बन एटम ऊपर थिला नाही इथिन केस जो पाई बॉन्ड थिला दीटा पाई बॉन्ड बा दीटा कार्बन एटम नहीं करा होतला बट इन केस ऑफ योर ब्यूटाडाइन थिला नाही इथिन केस जो पाई बॉन्ड थिला दीटा पाई बॉन्ड बा दीटा कार्बन एटम नहीं करा होतला बट इन केस ऑफ योर ब्यूटाडाइन सेठी कंजुगेशन होची नाही कंजुगेशन हेले टोटल डिलोकलाइज हो इलेक्ट्रॉन तो चारिटा सेठी कंजुगेशन होची नाही कंजुगेशन हेले टोटल डिलोकलाइज हो इलेक्ट्रॉन तो चारिटा कार्बन ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करिवो ओके जेतु कंजुगेशन हबो चारिटा पाई चारटा कार्बन एटम ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करिवो पर्टिकुलरली मु जीबी ओके पर्टिकुलरली आम देखा कौन हो जनरली कंजुगेशन जो बढ़ेबा कंजुगेशन इंक्रीज करुच से जनरली आम देखुं आगे बुझा कौन हो देन केमी हो बुझा फास्ट कौन हो कंजुगेशन बढ़ेले आम देखुं ऑब्जर्वेशन जो हम वेवलेंथ लंगर वेवलेंथ हम धर इथिन ऑब्जर्व कर 17 नैनोमीटर रे बट ब्यूटाडाइन जोटा कि दीटा इथिलिन यूनिट नहीं से ऑब्जर्व करो 217 एटा थिला 170 सेटा पर 217 170 नैनोमीटर थिला सेटा केते 217 नैनोमीटर लंगर वेवलेंथ बढ़ी गला दैट मींस एनर्जी कमुच माने तुम कोन बुझिबो हमर जो पाए और पाए स्टार भीतर जो गैप थिला कमी जाउछ ने हमर तो माने कोन कहलो एटी जो ट्रांजिशन हबो एटी जो यूवी ऑब्जर्वेशन हबो ड्यू टू पाए स्टार ट्रांजिशन सो जिते से एनर्जी कमिबो पाए और पाए स्टार से गैप कमिबो जिते गैप कमिबो सेते हम कोन देखिबा जिते गैप कमिबो सेते त माने थिबो जिते गैप कमिबो सेते एनर्जी कमिला वेवलेंथ बढ़िबो सो हमें ड्यू टू कंजुगेशन देयर इज इंक्रीज इन वेवलेंथ जते वेवलेंथ बढ़ी जाउची दैट मींस द एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होच कोड टुवर्ड्स रेड एंड बा रेड शिफ्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर सलेनी जते वेवलेंथ बढ़े एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम कहते रेड शिफ्ट सो रेड शिफ्ट हो तो एति के जानले जे जते बेले हम कंजुगेशन बढ़ुचंती द गैप बिटवीन पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल डिक्रीजेस डिक्रीज करूची बोली वेवलेंथ एनर्जी कम होची जे गैप से हम पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉन जीवो पाई टू पाई स्टार दीटा भीतर गोटे ब्रिज तैयारी हो जाउची रास्ता कमी जाउची तो शॉर्टकट रे शीघ्र पहुंच जाउछो बा गैप कमी गला जो डिस्टेंस थिला सही बढ़िया जते पाई और पाई स्टार भीतर एनर्जी गैप कमी जाउची एनर्जी कम दरकार होची फॉर ऑब्जर्वेशन बा ट्रांजिशन जो होची कम एनर्जी ट्रांजिशन होची तो एनर्जी कम हेले वेवलेंथ अधिक हबो सेटा हम ऑलरेडी जानिछो सो कंजुगेशन हेले एतिक जानलो कंजुगेशन हेले देयर इज शिफ्ट इन एक्टिवेशन स्पेक्ट्रा एंड ऑब्जर्वेशन विल occur at longer wavelength which is known as red shift ताको हमें red shift कहबा ओके एंड आल्सो से जो ट्रांजिशन को हमें जो ट्रांजिशन जो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन हुए इन कंजुगेट डाइन ताको के बैंड बोली हमें कहते ओके एटा पढ़ा है के बैंड आर बैंड तुम सब ऑलरेडी पढ़ाई क्लास रे सो एबे एमो डायग्राम बसो काहे के एमती होउछ काहे के एनर्जी कमिला जदि हमें देखिबा क्वेश्चन सर एनर्जी काहे कमुछ काहे के पाई पाई स्टार एनर्जी कमिला देखिबो एमो डायग्राम तो माने होप समस्त परिसार थिबो से तो मदन टाइम देथिली तो जदि होमो एनर्जी डायग्राम देखिबो दीटा इथिलिन यूनिट अछन कारण दीटा इथिलिन यूनिट मिसिला हमर जोडी ब्यूटाडाइन होउची दीटा इथिलिन यूनिट टू हमर पाई ऑर्बिटल माने अछंती से माने दे विल फॉर्म एमो से माने करबे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्ट करे दे विल कंस्ट्रक्ट ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से माने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन करिवे से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमिति वे रे हबो ओके
दीटा हम बॉन्डिंग दीटा हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल दीटा हम बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल और दीटा हम एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल देखिबा जेतेबेले देखो पाई 1 पाई 2 मिसी दीटा वे मिसी ओके गोटे हला जो बॉन्डिंग रे मिसी गोटे एनर्जी कमी छी आ गोटे ताठू एनर्जी अधिक है ओके जो दीटा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बाहर छी जनकर एनर्जी कमी गला स्टेबल हो गला आ एनर्जी बढ़िला बट एते बॉन्डिंग जे एंटी बॉन्डिंग हे जिवो एंटी बॉन्डिंग टू कम रहइबो बट जो तळ जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल अछि जो पाई 1 नै छंती पाई 1 टू पाई 2 एनर्जी अधिक रहिला देन से वाला पाई स्टार माने ये इथिलिन पाई स्टार आरो इथिलिन दीटा इथिलिन यूनिट अछि दीटा इथिलिन यूनिट रो पाई स्टार मिसे के सेम दीटा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल देला दीटा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से माने जनक एनर्जी कम रहिला आ जनक एनर्जी अधिक रहिला तो चारटा देखो पाई 1 मिलला पाई 2 मिलला पाई 3 मिलला पाई 4 मिलला नहीं चारटा एटा ऑर्बिटल पाई जंती पाई 1 पाई 2 पाई 3 or you can say pi 1 star pi 2 star एमती कोइ पारो तो pi 1 star pi 2 star कहबी that is also okay or you can say pi 3 or pi 4 and pi 3 or pi 3 star pi 4 star कर दो star एंटी बॉन्डिंग हम पई इजी रिलेशन को स्टूडेंट बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग हम स्टार दो इजी हुए हमको तो तुम देई पाइलो सिटी कोन pi 1 pi 2 for bonding and pi 3 star pi 4 star for anti bonding now देखिबा पाई 1 पाई 2 एनर्जी कार अधिक अछि पाई 2 स्टार सॉरी पाई 2 रे एनर्जी अधिक अछि बिटवीन पाई 1 पाई 2 पाई 1 और 2 भितरे पाई 2 रो एनर्जी अधिक अछि एंड जहार एनर्जी अधिक बा मैं ओडे वर्ड सुनन कोन हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर होमो बोल तो सुनिथियो श्योर राइट होमो तो सुनिछ तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अछि तो होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कोठा बैठी जो होमो हम जब कहबा एटी काहा को हम होमो कहबा हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो एटी काहा कहबा होमो एटी हम कहबा पाई 2 कारण से दीटा इलेक्ट्रॉन अछि दीटा अछि पाई 1 ने दीटा अछि पाई 2 रे तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चारटा ऑर्बिटल मानक भितरु ओ ऑर्बिटल एनर्जी सबटु अधिक सेटा कोठा माने ओ ऑक्युपाइड ऑर्बिटल सॉरी चारटा ऑर्बिटल मानक भितरु ओ ऑक्युपाइड ऑर्बिटल एनर्जी सबटु अधिक है कोठा हबो पाई 2 ओके सेटा पाई 2 हबो सेटार एनर्जी सबटु अधिक हैला ऑक्युपाइड ऑर्बिटल भीतर दैट इज होमो तो वी नो होमो रो इलेक्ट्रॉन कोठी जाय लुमो को जाय होमो लुमो कोन हो एनर्जी ट्रांजिशन होची होमो टू लुमो सो जो होमो लुमो एनर्जी ट्रांजिशन होची लुमो एटी कोठा हबो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो तुम माने निजे को से डायग्राम देखि कि एटी लुमो कोठा हबो चारटा आसला पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 3 स्टार पाई 4 स्टार तो हमें गुटे से देखले हम कोन गुटे देखले जे हमर पाई 1 पाई 2 रे इलेक्ट्रॉन रहउचंती पाई 3 स्टार पाई 4 स्टार इलेक्ट्रॉन नाहंती सो होमो हमें डिसाइड करले कोठा हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमर होमो कोठा हला पाई 1 पर पाई 2 अछि तो पाई 2 इलेक्ट्रॉन अछि पाई 3 पाई 2 देन पाई 3 स्टार का कोन बता रे बोले लुमो कोठा बोले हम देखिबा यस 3 पाई 3 स्टार तो पाई 3 स्टार लुमो हले तुमर कोन हबो ट्रांजिशन का भीतर होमो टू लुमो भीतर हबो ओके होमो टू लुमो भीतर कोन हबो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन हबो तो एटी जो ट्रांजिशन हबो फ्रॉम पाई 2 टू पाई 3 स्टार इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हबो पाई 2 टू पाई 3 स्टार ओके पाई 2 टू पाई 3 स्टार देन तुम जिनसे देखो से डायग्राम परसंत करथियो करछ तो देन तुम जिनसे देखो से डायग्राम परसंत करछ तो मन करनो टिके माने डायग्राम देखो डायग्राम न देले किछ बुझी परिबो नाही हला तो डायग्राम कोन देखिबो जो डायग्राम हम देखिबा तो नॉर्मल जो थिला नॉर्मल जो इथिलीन यूनिट थिला तार पाए 5 टा गैप टा देखो नॉर्मल इथिलीन यूनिट जो थिला तार पाए और 5 टा भीतर गैप टा देखो ओके नॉर्मल इथिलीन यूनिट 2 एपे जो होमो वाला कोटा होमो वाला पाई 2 और लुमो वाला पाई 3 एपे पाई 2 भीतर गैप टा देखो और नॉर्मल इथिलीन रो पाए और 5 टा भीतर गैप देखो ला तो गैप देखी कौन जानी पर सके
कौन होची कुह गैप टा देखिए मत कुह कौन तुम जानी परछो निजे को जानी परछो गैप देखिए निजे कौन जानी परछो कुह सो गैप अच्छी इथिलीन 5 यूनिट एंड इथिलीन 5 गैप भीतर आम जो एमओ फॉर्मेशन है ड्यू टू ओवरलैप ऑफ 2 इथिलीन यूनिट्स तार जो पाए 2 आउ पाए 3 भीतर गैप और होमोलुमो भीतर गैप केते अछि आउ नॉर्मल इथिलीन यूनिट रो पाए आउ पाए स्टार भीतर केते अछि तमे से डायग्राम देखि कोन जानि पालो मते रिप्लाई दे रिप्लाई दियो कोन जानि पालो हम जानि पाले डायग्राम करछो तो डायग्राम न करके जानि पालो सीधा डायग्राम टा करो डायग्राम देखला समझते आउथरे कहूची इथिलीन ना पाए और पाए स्टार गैप देखो आमे जो एमओ तयारी कले से एमओ रे गैप टा भी देखो हला से एमओ रे गैप भी देखो का भीतर पाए 2 पाए 3 भीतर गैप देखो पाए 3 स्टार भीतर गैप देखो आउ इथिलीन नो पाए और पाए स्टार नॉर्मल इथिलीन नो पाए पाए स्टार गैप देखो आ तमर जो निहाई छी हमर कोन हमर जो कंपाउंड निहाई छी जो हमें रिजल्टिंग कले ब्यूटाडाइन ड्यू टू ओवरलैप ऑफ दीटा इथिलीन यूनिट ओवरलैप करके फॉर्मेशन हिची तो सेठी जो एमओ रे पाए 2 पाए 3 रे गैप देखो गैप देखि कोन जानलो मते को कोन जानिलो मते देखो नॉर्मल इथिलीन में देखो नॉर्मल इथिलीन गैप टा इतने एते गैप अछि नॉर्मल इथिलीन तरे एटा धर पाए स्टार एटा पाए एटा होची गैप इन नॉर्मल इथिलीन बट जब कंजुगेट डाइन नहीं गले ब्यूटाडाइन केस रे गैप टा कोन होची पाए टू पाए 3 तरे कमी जाउची जते बेले दीटा पाए और पाए स्टार गैप कमी गला बा होमोल मते गैप कमी गला कम दरकार एनर्जी को पाई कम एनर्जी दरकार फॉर ट्रांजिशन ट्रांजिशन पाई कम एनर्जी दरकार जेहेतु कम एनर्जी दरकार सेति पाई हम कोन कर परिबा सेति पाई कम एनर्जी दरे टेंशन हबो सो इट विल शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ हैला इडा एति गैप थिला कोटे नॉर्मल इथिलीन ने जते बेले ब्यूटाडाइन हे गला तो रिजल्टिंग जो एमओ हैला तार एति गैप थिला रिजल्टिंग एमओ हैला ड्यू टू ओवरलैप ऑफ 2 इथिलीन यूनिट्स ताकर होमोलुमो गैप टा कमी की एति हे गला जेतु तो एनर्जी ताकर गैप कमी गला होमोलुमो भितरे सो वी नीड लेस एनर्जी फॉर एब्जॉर्प्शन तो एनर्जी कम दरकार हेले बट ट्रांजिशन पाई दरकार कम एनर्जी सो एनर्जी कम दरकार हेले वेवलेंथ कोन हो अधिक हो लंगर वेवलेंथ सो एनर्जी पाए टू बाय हमर जो रिजल्टिंग होमो फॉर्मेशन होची होमोटा एमिति वेर फॉर्मेशन होची होम सॉरी रिजल्टिंग जो एमओ करचंती एमओ जो होमोलुमो गैप टा कोन होची कमी जाउची देन नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल जो पाए पाए स्टार थिला तार को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाए टू पाए 2 पाए 3 होमोलुमो गैप टा कम रोची जे गैप टा कम रोची hence we need less energy for transition energy कम दरकार then wavelength will be longer that's why longer wavelength will be favorable but or due to conjugation the absorption shifts towards longer wavelength तो कहि परिबो जते बेले तमरो दीटा डबल बॉन्ड कोन होची conjugation रहउची हमरो एनर्जी ऑफ होची हाईएस्ट ऑक्युपाइड तो एनर्जी ऑफ होमर जते बेले तो व्हेन देयर इज कंजुगेशन फाइनली हम कोन कंक्लूड हेले व्हेन देयर इज कंजुगेशन देयर इज इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ होमर एनर्जी बढ़ुची इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ होमो बट डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ लुमोर एनर्जी कम होची देखो पाए स्टार कोठी थिला कोठ आसिला तर पाए स्टार ए लेवल ले थिला कम की एठी आसिला कमी गला सेमति होमर तर 8 थिला बॉडी के एठी पळेला होमर एनर्जी बढ़िबो कंजुगेशन हेले लुमोर एनर्जी कमिबो तो तुम फाइनली कंट्रोल कोन करिवो इन ड्यू टू कंजुगेशन देयर इज इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ होमो एंड डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ लुमो होमर एनर्जी बढ़िबो लुमोर एनर्जी कमिबो increase in energy of homo decrease in energy of lumo
As a result, the gap between homonomer will decrease. ଜଣେ କମିଲା ଆଉ ଜଣେ ବଢିଲା ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଗଲା ଦି ଜଣ ସେମ୍ ଆକ୍ସନ ହେଇଥାନ୍ତା ଦି ଜଣ ଏନର୍ଜି ବଢିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ଅପୋଜିଟ୍ ହଉଛି ଜଣେଙ୍କର ଏନର୍ଜି କମୁଛି ଆଉ ଜଣ ବଢୁଛି that's why the gap will decrease and when the energy gap between the two orbitals is less the wavelength will be more so the observation shifts towards longer wavelength so এটা ହେଲା ତାର conjugate dyne ତାର answer ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ କଣ ଏଠି ହଉଛି କେମିତି କମିଲା ତ conjugate dyne ବୁଝିପାରୁଛ ଯେତେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝ ଯେତେ କଞ୍ଜୁଗେସନ ବଢିବା ତାର ବ୍ୟୁଟାଡାଇନ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେକ୍ସା ଟ୍ରାଇନ୍ କରିଦବା ଯଦି এটা ଅଛି ବ୍ୟୁଟାଡାଇନ୍ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଇଥିଲିନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଥିଲିନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବି ଏନର୍ଜି ଆହୁରି ମୋର ବଢିବ ମୋର ଆହୁରି କମିବ ଯେତେ କଞ୍ଜୁଗେସନ ବଢେଇ ଚାଲିବା ସେତେ କଣ ହବ ସେତେ ତମର ଏନର୍ଜି କମିବ ଯେତେ ଏନର୍ଜି କମିବ ସେତେ ଆବଜର୍ପସନଟା କଣ ହବ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଲଙ୍ଗର ୱେଭଲେନ୍ଥ ସିଫ୍ଟ କରିବ ଲଙ୍ଗର ୱେଭଲେନ୍ଥ ଆବଜର୍ପସନ ସିଫ୍ଟ କରିବ ଓକେ so this is in case of conjugate dyne then another question for you question ତମକୁ ଆସିବ what is the effect of solvent in the observation of conjugate dyne ପାଇଁ solvent ର କଣ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ ତମମାନେ ମତେ କୁହ solvent ର କଣ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ for conjugate dyne ପାଇଁ solvent ର କଣ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ conjugate dyne ପାଇଁ solvent ର କଣ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ solvent ଇଫେକ୍ଟ ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ତ ପଢା ହେଇଛି ତମମାନେ କୁହ what is the effect of solvent on conjugation or conjugate dyne ଅଛି ସେ solvent ର କଣ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ ଏଣ୍ଡି ଗେସ୍ କର आंसर दियो नो इफेक्ट conjugate dyne ओके अन्यମାନେ ଆଗକୁ କହୁଛୁ କୁହ ଦେଖିବା solvent concentration increase କଲେ intensity ଅଧିକା ହେବ transition को ଅଧିକା ଏନର୍ଜି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ओके actually in case of conjugate dyne इफेक्ट ତ ପଡ଼ିବନି କିଛି negligible इफेक्ट is ପଡ଼ିବ no effect କହିପାର କାହିଁକି ବିକଜ ହଁ ମାନେ ପୋଲାର ନନ୍ ପୋଲାର ହଉ ଏଠି କିଛି କଞ୍ଜୁଗେଟ୍ ଡାଇନ୍ କେସରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବନି କାହିଁକି ରିଜନ ହେଉଛି ଯୋଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡଟା ପୋଲାର ଥିବ ପୋଲାର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ସେଠି ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ କୋଉଠି ଯୋଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡଟା ପୋଲାର ଥିବ ଲାଇକ୍ କାର୍ବୋନିଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କାର୍ବୋନିଲ କେସରେ ସଲଭେଣ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ ବିକଜ ଦ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଜ ଏ ପୋଲାର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ polar solvents will have impact on absorption factor but in case of your dynes or conjugate dynes there is no difference in polarity the compounds are non-polar ମାନେ polar compound ନୁହନ୍ତି ଯେହେତୁ compound ମାନେ polar ସେଠି ନୁହନ୍ତି non-polar ତ ସେଠି solvent ରେ effect ରହିବ ନାହିଁ that's a solvent will have no effect on absorption of conjugate dynes okay ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଆଡ୍ କରିକି ସେ ନୋଟଟା ପଠେଇଦେବି ତ conjugate dyne ଏତିକି ସରିଲା ତ ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କି ଡାଉଟ୍ ଫାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାର ଦେନ୍ ନହେଲେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା your carbonyl compounds ତ କଣ ଅଛି ପଚାର ଦିଅ ଡାଉଟ୍
କାହାକୁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାର, rather than ଆମେ ମୁଭ୍ କରିବା towards carbonyl compound. Higher wavelength रे absorption maximum हो ना हमरो wavelength रे डिपेंड कहाँ पर करछि एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन. ओके, जत्ते एनर्जी कमी सेते हायर वेवलेंथ को शिफ्ट कला. absorption हमर कोन छै हमें यूवी देले हमरो होमोरो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कोड करी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हबो. इट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हमें जो इट इज इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा हमें जो यूवी स्पेक्ट्रा मींस इट इज इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा. There is transition of electron from homo to lumo, homo to lumo को जाउछि. So हमें जे इलेक्ट्रॉन अछि कोन लोअर ऑर्बिटल द लोअर एनर्जी अछि ताको हायर एनर्जी पठेबा. दैट्स व्हाई वी हैव टू सप्लाई एनर्जी. हमें ताको एनर्जी दबा केते एनर्जी ऑब्जर्व करले से जीवो जेते डिफरेंस ता कोन थिबो जिते डिफरेंस कम थिबो सेते कम दरकार एनर्जी. जिते डिफरेंस अधिकार होमोलो भीतर होमोलो मतलब गैप एते गैप अछि तो वी नीड मोर एनर्जी. तो होमोलो गैप एते कम अछि वी नीड लेस एनर्जी. लेस एनर्जी देले इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम दिस ऑर्बिटल टू दिस ऑर्बिटल. तो गैप अधिकार अछि इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हायर एनर्जी फॉर ट्रांजिशन. ओके, अधिकार देले एनर्जी देयर ट्रांजिशन हो. एनर्जी कम देले होबनी जोटी होमो लुमो गैप का अधिकार थिबो वी नीड हायर एनर्जी. जोटी होमो लुमो गैप कम थिबो वी नीड लोअर एनर्जी. हायर एनर्जी मींस ऑब्जर्वेशन. हम कुछ ऑब्जर्वेशन अधिक मैक्सिमम को ऑब्जर्वेशन को मैक्सिमम जोटी एनर्जी अधिक दरकार. दैट मींस जोटी वेवलेंथ कम एनर्जी अधिक और जोटी ए गैप होमो लुमो गैप अधिक से केस रे अधिक ऑब्जर्वेशन काहे कि एनर्जी अधिक दरकार. तो अधिक हेले जे गैप अधिक होमो लुमो भीतर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पाई we need more energy because the gap between homo lumo is more. But जो केस रे एनर्जी कम सॉरी जो केस रे गैप होमो लुमो गैप कम in that case we need less energy. तो जो कि less energy higher wavelength सेठी अधिक एनर्जी दरकार नै ऑब्जर्वेशन करिवा. जो कि गैप कम सेठी अधिक एनर्जी ऑब्जर्व करै दरकार नै. जो गैप अधिक थिबो सेठी से अधिक एनर्जी ऑब्जर्व करिवो. अधिक एनर्जी वेवलेंथ कम. So higher wavelength means lower absorption. Okay, इंटेंसिटी अधिक हायर इंटेंसिटी हायर वेवलेंथ हायर इंटेंसिटी कोइ पारो सब केस नुए एन पाई स्टार अलगा हे जाउछि. तो एई जो पाई स्टार कहउछ पाई स्टार ट्रांजिशन ने हायर वेवलेंथ मींस हायर इंटेंसिटी. ओके, किंतु एनर्जी कम हायर वेवलेंथ एनर्जी कम ऑब्जर्वेशन कम आसी. बुझ पारलो भाइयो? क्लियर हैला? आउ केरा डाउट रहला? आउ केरा डाउट अछि? Okay, then I move towards carbonyl compounds. So carbonyl compounds first CU, right? C double bond O and O per lone pair अछि, you know that. So question is first question ठीक को टाइप रो ट्रांजिशन आमे देखिबा. फर्स्ट क्वेश्चन हला ठीक को टाइप रो ट्रांजिशन आमे देखिबा. तापर डिस्कस करिबा कोन हबो कोन नाही व्हाट आर द इफेक्ट पर कथा. N2 pi star yes आउ आउ कोन हबो N2 pi star गोटे आउ आउ कोन हबो N2 pi star करेक्ट pi star n pi star yes समस्ते ठीक कहछो n pi star and pi star because n pi star काहे हो
due to presence of lone pair of electron, due to presence of lone pair of electron. Yes, correct समझ ठीक कहଛ ये दीटा हमें देखिबा नहीं एठी हमें दीटा टेंशन देखिबा बिकॉज़ ये दीटा अछि टू टाइप्स देखाबो काहे की देखो गोटे हमर अछि कोन एठी गोटे अछि pi bond अछि between carbon and oxygen, and there is also our कोन अछि lone pair भी इलेक्ट्रॉन अछि ऑक्सीजन ऊपर. So एठी हमें दीटा देखिबा ट्रांजिशन. One is n pi star, other one is pi pi star. Pi pi star, n pi star देखियो ट्रांजिशन. Normal carbon compound हमें alpha beta unsaturated carbon compound पर डिस्कस करिबा. First one is normal carbon compound compound. Normal carbon compound, we are observing two tensions. One is n pi star due to presence of lone pair of electron, and kaha par lone pair oxygen upar achi pi bond already achi carbon oxygen to pi bond achi. So जो pi bond achi से pi pi star देखिबा oxygen जो lone pair achi oxygen upare से n pi star tension देखिबा. Okay, so our question is क्वेश्चन आसो तुम पढ़ी डिस्कस कर सारे. फास्ट व्हिच वन विल बी इंटेंस जो पाई पाई स्टार एन पाई स्टार भितर कोटा इंटेंस पाई पाई स्टार और एन पाई स्टार भितर को ट्रांजिशन टा इंटेंस व्हिच ट्रांजिशन विल बी इंटेंस. पाई पाई स्टार एन पाई स्टार तो ऑर्बिटल कहती नहीं ऑर्बिटल कहन कौन कौन रहिबो आगे सिग्मा रहिबो हमें एटा बारंबार यूवी रे पढ़थिले क्लास पढ़ला आगे सिग्मा रहिबो तापर पाई रहिबो पाई परे नॉन बॉन्डिंग बा एन रहिबो एन परे हबो एन परे के रहउची पाई स्टार तो सिग्मा स्टार एई अनुसार हम को रहे ऑर्बिटल रहे यू नो दैट क्लास से पढ़ा है. तो बर्तन पाई देखिबा कोन आंसर होची n pi stars को कहछो आउ संगता मनुष्यता pi pi stars को कहछो the good answer n pi star हो ना pi pi star which one will be intense and which one will have longer wavelength कहार wavelength अधिक हबो आउ कहार intensity अधिक हबो और both will be same. तो दीट हबो n pi star pi pi star. So question is ताको भितरु कहार wavelength अधिक हबो आउ कहार इंटेंसिटी अधिक और बोथ दी जण जाक गोटे टेंशन हम बा गोटे टेंशन वेवलेंथ जो टेंशन वेवलेंथ अधिक हम तार ही कोन अधिक हम हमर इंटेंसिटी सेरा ऑप्शन आउट ऑप्शन होची जनकर वेवलेंथ अधिक हम आ जनकर इंटेंसिटी अधिक हम. तो कहार वेवलेंथ अधिक हम कहार इंटेंसिटी अधिक हम और जो टेंशन नो वेवलेंथ अधिक हम सेही टेंशन रो इंटेंसिटी अधिक हम. आंसर दियो सिंगल का आंसर कोन देलो लॉन्गर वेवलेंथ n to pi star. अच्छा तो आंसर दियो कहार वेवलेंथ अधिक हबो कहार इंटेंसिटी अधिक हबो और बोथ वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी गोटे टेंशन नहीं अधिक हबो. ओके intensity pi to pi stars unaki n pi star longer wavelength of smoothly n pi star more intense. Okay, maybe the longer wavelength n pi star so wavelength high intensity high n pi star. Okay, so कहा मतलब समस्त आंसर मैच कला नहीं अलग अलग आंसर आसला ताला हमें कोन कहबा कहार टेंशन अधिक हबो ताले प्रगति इंटेंसिटी अधिक pi pi star wavelength n pi star less intense longer wavelength इतनी मोर सुविधा से n pi star less intense longer wavelength. ओके तथापि आर्बिट्रारली प्राय मैक्सिमम आंसर ठीक है n pi star will have longer wavelength नहीं बिकॉज़ हम जो एमओबी डायग्राम देखिबा भी हमें आगे पढ़िबा एमओ डायग्राम पढ़िबा देखिबो नॉन बॉन्डिंग देख आगे के रहउची सिग्मा पाई पाई पर की नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार देन सिग्मा स्टार ताले नॉन बॉन्डिंग ऊपर ठीक के रहउची पाई स्टार तो नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार ते गैप सबटु कम जेहेतु नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई स्टार ऑर्बिटल भीतर गैप सबटु कम सेति पाई एन सबटु अधिक
जोटे सॉरी जेहेतु एनर्जी गैप सब कम वेवलेंथ सब अधिक नॉन बॉन्डिंग पर होची पाई स्टार जेहेतु पाई स्टार नॉन बॉन्डिंग भीतर एनर्जी गैप सब कम हेंस दैट ट्रांजिशन विल हैव लॉन्गर वेवलेंथ कम एनर्जी लॉन्गर वेवलेंथ देन अकॉर्डिंग टू रूल आम जहाँ पढ़ी ये हवा कथा कौन एन पाई स्टार ट्रांजिशन टा हाईली इंटेंस हवा कथा हाईली इंटेंस हवा कथा बट होनी पाई पाई स्टार मोर इंटेंस दैट्स सेटा कौन पाई काहे की व्हाई कौन पाई एन पाई स्टार ट्रांजिशन टा ऑल्दो द wavelength of observation for n pi star transition is longer compared to pi pi star transition. Pi pi star transition ठारू n pi star transition ପାଇଁ जो wavelength ରହୁଛି ଅଧିକା ରହୁଛି ବା longer wavelength ରହୁଛି still the intensity of n pi star transition is less. Why? Answer मते को कौन ପାଇଁ इंटेंसिटी कम होची तो वेवलेंथ अधिक होची माने हम जानछन रेड शिफ्ट होची माने हम इंटेंस देखाबा हम रेड कलर एनर्जी कम हाई वेवलेंथ रेड कलर हम दूर देखा जाउछ सेति पई नहीं हाई इंटेंसिबल सेम जिनसटी पचरा होची जे जति वेवलेंथ तो तार कम हला ताले कोन पई इंटेंसिटी टा अधिक हला ना वेवलेंथ अधिक हला सॉरी एन पाई स्टार वेवलेंथ अधिक हला कोन पई इंटेंसिटी टा भी अधिक हला नाही एन पास्ट यस अरे एन आंसर से एन पास्ट लो एनर्जी हम ऑलरेडी कहछन एन पास्ट लो एनर्जी जेहेतु एन पास्ट लो एनर्जी दैट मींस लॉन्गर वेवलेंथ तो जो माने लॉन्गर वेवलेंथ हेबे दैट मींस कलर इंटेंस हबा कथा जनरली लॉन्गर वेवलेंथ ले कलर इंटेंस हबा कथा बिकॉज़ शिफ्ट कोड हो जितो रेड शिफ्ट हो हम कहछन लॉन्गर रेड शिफ्ट माने टुवर्ड्स रेड माने सबटु जार वेवलेंथ कम नहीं सॉरी रेड माने जार सबटु वेवलेंथ अधिक एनर्जी कम रेड मीन्स जार वेवलेंथ सबटु अधिक एनर्जी सबटु कम सो एटी एन पाई स्टार रे कोन होची एन पाई स्टार रे एनर्जी सबटु कम दरकार होची तो एनर्जी कम दरकार होची माने वेवलेंथ सबटु अधिक हबो तो वेवलेंथ सबटु अधिक हबो मींस यार कलर भी इंटेंस आसीबा कथा अकॉर्डिंग टू रूल तो आंसर को आसला सिमेट्री फॉरबिडन कलम मसुदा सिनता कहलो सेति कम इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कम इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होल नहीं सेटा आंसर नहीं मधुस्मिता आंसर इज करेक्ट हो जोटी सिमेट्री फॉरबिडन एन पाई स्टार ट्रांजिशन इज सिमेट्री फॉरबिडन सिमेट्री मैच होनी हम जो सिलेक्शन रूल थाए ट्रांजिशन जेहेतु एन पाई स्टार ट्रांजिशन एंटीबॉडी नॉन बॉन्डिंग यस एंटीबॉडी नॉन बॉन्डिंग सिमेट्री मैच करूनी पर्टिकुलर सिमेट्री कहबो जेतु सिमेट्री एंटी बॉन्डिंग आ यार नॉन बॉन्डिंग आ पाई स्टार ऑर्बिटल किंतु एन सिग्मा स्टार मैच करिवो मन रखता एन सिग्मा स्टार विल बी इंटेंस एटा भलो से मन रखता एन सिग्मा स्टार विल बी इंटेंस बट एन पाई स्टार विल बी लेस इंटेंस बिकॉज़ the symmetry of pi star orbital and non bonding orbital will not match करिवो नाही मैच होनी pi star orbital आ ए नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिमेट्री जेहेतु मैच करूनी सेति पई तमे को कहि परिबो तो सेति पई कहबो the transition is not allowed it is not allowed transition although it is happening eta होउची still it is not a allowed transition that's why as it is not a allowed transition hence although the observation wavelength is higher or longer wavelength observed होउची still intensity is lower pi pi star रो एनर्जी अधिक बा वेवलेंथ कम देन n pi star but pi pi star transition is allowed transition that's why pi pi star transition is a intense transition compared to n pi star transition reason हला कोन n pi star symmetry forbidden but pi pi star symmetry allowed but जदि n sigma star पचार दला n sigma star is symmetry allowed एति बुझि पालो क्लियर कौन पाई n pi star although longer wavelength रे absorb करूची but still it is less intense reason हला it is symmetry forbidden pi star orbital और non bonding orbital symmetry match करनी क्लियर यार डाउट ला पचारो ताले आगु बुझिबा मूव करिबा क्लियर हेलो समस्त डाउट से पचारो सो आम मूव करवा आगे
again देखिबा कार्बोनिल हम कोन कोन अछि त कार्बन दीटा देखिबो ट्रांसन n pi star and pi pi star सेत पे हमें कलर देखिबा एंड बट जते बडे कंजुगेशन होछि त देखिए बेटा कंजुगेशन माने नाउ तोर এটা হচ্ছে কোন এটা হলো কার্বনিল গ্রুপ CO গ্রুপ এটা CO ধরো দিস ওয়ান আলফা এটা হলো বিটা এর ডবল বন্ড আছে ওকে এটা হচ্ছে তোমার ডবল বন্ড আলফা বিটা পোজিশন ডবল বন্ড okay so now this one is carbonyl okay এই পেন্ট হলো carbonyl this one is এটা এই যেটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে আলফা কার্বন এটা কার্বনিল কার্বন দিস ইজ ডবল বন্ড এটা হলো আলফা বিটা এটা হচ্ছে বিটা কার্বন এটা আলফা কার্বন তো এই যে বন্ড হলো কোন আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড বন্ড এন্ড দিস ইজ দ্য কার্বনিল কার্বনিল গ্রুপ সো এইগুলা কেস মানে আলফা বিটা কার্বন বা আলফা বিটা অনস্যাচুরেশন দ্যাট মিন্স আলফা বিটা যে কার্বন থিব তাଙ୍କ ভিতরে কোন থিব ডবল বন্ড থিব আলফা বিটা যে কার্বন থিব তাଙ୍କ ভিতরে ডবল বন্ড থিলে what will happen in the observation of UV spectra जो n pi star होची pi pi टेंशन होची ताको पर कोन इफेक्ट पड़िबो जदि कंजुगेशन थिबो जेमिति हम कंजुगेट डाइन पढ़ितले एडी सेमति पढ़िबा कंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स ओके और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स ओके एटा अल्फा कार्बन बीटा कार्बन तो अल्फा बीटा कोन डबल बॉन्ड अछि सो ए डबल बॉन्ड थिले कोन हबो तो एटी सेमति एमो देखो तोर एमो ऑलरेडी मु पठे देस तुम देखतिबो तो एटी जो एमो डायग्राम हम देखिबा इन एमो डायग्राम एटी से बडे होछि एटी कोन अछि एटी जो पाई पाई दिटा बॉन्ड आछि को पाई बॉन्ड आछि कोटा आछि पाई बॉन्ड सेठी तो थिला दिरा इथिलेन यूनिट एठी देखो एठी गोटे पाई अछि कोटा कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड गोटे अछि पाई आ गोटे पाई कोट अछि कार्बन ऑक्सीजन सो जो दिटा पाई मिसिबे तो से कोन देबे सेम दिटा बॉन्डिंग भारिबो दिटा एंटी बॉन्डिंग भाला ओके देखो गोटे पाई बॉन्ड मींस तार बॉन्डिंग तार एंटी बॉन्डिंग सेमते आ गोटे पाई बॉन्ड कोन थिबो तार बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग तो यार गोटे पाई मींस दिटा ऑर्बिटल बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग तार बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग तो केतरा हला चारटा ऑर्बिटल मिसिबे एंड वी नो जेतेटा एटॉमिक ऑर्बिटल मिसिबे सेते कोन भारी सेति की रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हबो सो एटी जो फॉर्मेशन है देखो pi 1 pi 2 हिची ड्यू टू ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग रे को हिची सेमति pi 3 स्टार pi 4 स्टार हिची एंटी बॉन्डिंग तो से जो pi 2 pi 3 भीतर आउ जने n बोली गोटे ऑर्बिटल देखो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी अछि भलो से डायग्राम देखो जो डायग्राम को हम पठै छी देखो सेतरे बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो ओवरलैप करले से कोन कला दी टाइम होता बा दीटा भारला हमर रिजल्टिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल दीटा पाई फॉर्मेशन हला दीटा पाई हम बुझ गोटे जनर एनर्जी कम और एनर्जी अधिका पाई 1 पाई 2 देन पाई 3 स्टार होची पाई 4 स्टार जेमित हमें को डाइन ने पड़तल सेम जिंस एटी एक्स्ट्रा कोटा रहला एटी एक्स्ट्रा रो देखो गोटे पाई 2 पाई 3 स्टार भीतर गोटे n बोली नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टे अछि पाई 2 और पाई 3 स्टार भीतर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टे रहि जाई छी सो ताको हमें केमते एनालाइज करबा तो ट्रांसलेट कोन तो इट इज सेमती your pi 1 pi 2 pi 3 star pi 4 star out of this pi 3 star and pi 4 star are vacant pi 1 pi 2 are occupied and we know homo decay pi 2 hela homo and pi 3 star which कोन लुमो तो ट्रांजिशन का भीतर हम होमो टू लुमो होबो कोन ट्रांजिशन हो होमो टू लुमो सो जेतु होमो टू लुमो ट्रांजिशन हेले हम कोन पाइबा हमें आराम से एब्सोल्यूशन कलर पाइबा ओके यू विल गेट कलर बट आउ गोटे जन देखिबो जने n ता देखो n आउ पाई 3 स्टार दे गैप n ऑर्बिटल पाई 3 स्टार दे ऑर्बिटल जो अछि तार गैप केते अछि देखो पाई 2 आउ पाई 3 स्टार भीतर गैप केते अछि देखो बोलस देखो n2 n आउ पाई 3 स्टार n आउ पाई 3 स्टार ऑर्बिटल भीतर गैप केते अछि देखो pi 2 और pi 3 स्टार बा pi 2 हमर कोन होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल pi 3 स्टार लुमो होमो और लुमो भीतर केते गैप अछि आ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कर रहला n ऑक्सीजन जो लोन पेयर अछंती
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आउ पाई 3 स्टार भीतर गैप केते अछि देखो ओके गैप कोन कोटा अधिक कोटा कम गैप देखो पाई 2 पाई 3 स्टार भीतर गैप ता केते अछि आउ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई 3 स्टार भीतर केते गैप अछि कोटा कम कोटा अधिक अछि तुम माने निजे देखि मते आंसर दियो को गैप ता कम को गैप ता अधिक मते आंसर दियो pi to pi तो अधिक गैप यस pi to pi 3 स्टार अधिक गैप अछि देन n to pi 3 स्टार आउ गोटे क्वेश्चन होची नॉर्मल जो नबा नॉर्मल पाई पाई स्टार धर नॉर्मल जो पाई पाई स्टार खाली देखिबो एटम और लेदरा नहीं और अल्किन जो थिला ता गैप देखो ओके नॉर्मल पाई पाई स्टार गैप देखो पाई टू पाई 3 स्टार गैप देखो n टू पाई 3 स्टार गैप देखो तीनटा गैप देखिबो नॉर्मल पाई टू पाई स्टार गैप आउट गैप कोन देखिबो पाई टू पाई 3 स्टार पर गैप आउट देखिबो n टू पाई 3 स्टार पर गैप तीनटा गैप टा को मैच करो कहार एनर्जी सबटु अधिक देखो कहार एनर्जी सबटु कम देखो तो तीनटा मैच करले हमें एनालिसिस भल से कर परिबा तो तुमे देखो कोटा कोन गैप आंसर दियो तीनटा गैप देखो नॉर्मल जोटा हमर अछि पाई पाई स्टार गैप देखो आउट देखिबा पाई 2 पाई 3 स्टार दर गैप आउट देखिबा n टू पाई स्टार पाई 3 स्टार जोटा कहउछो n टू पाई 3 स्टार पाई 2 टू पाई 3 स्टार पाई टू पाई स्टार अंको तीनटा भीतर गैप देखो कहार सब अधिक एनर्जी गैप कार सब कम एनर्जी गैप देखो देखिए आंसर नॉर्मल पाई पाई गैप सब अधिक यस पाई पाई नॉर्मल पाई पाई स्टार गैप सबटु अधिक हबो प्राय दर ए लेवल एनर्जी हला सब अधिक एनर्जी गैप होबा पाई 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 टू पाई स्टार तेन कोडा रहउची पाई टू पाई 3 स्टार आउर कमी जाउची आ n टू पाई स्टार आउर कमी जाउची नै कि सबटु n टू पाई स्टार रो सबटु कम नै सो इटे गोटे समय बुझिबा जे कंजुगेशन हेले देयर विल बी जेमिति हमर डाइन केस रहउतला इन केस डाइन जेमिति हम देखुतले कंजुगेशन हेले हमर वेवलेंथ रे लॉन्गर वेवलेंथ रे एब्जॉर्प्शन होतला इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड सी ही हबो कंजुगेशन हेले एठी भी सेमति एब्जॉर्प्शन टा लॉन्गर वेवलेंथ हबो बट सबुटो अधिक लॉन्गर वेवलेंथ कोटा आसीबो एन पाई स्टार सबुटो अधिक लॉन्गर वेवलेंथ रे हम पाइबा एंड जेहेतु एन पाई स्टार सबुटो अधिक वेवलेंथ रे पाइबा तो दैट इज ए मेन एब्जॉर्प्शन सो सीओडी मेन एब्जॉर्प्शन कहिबो बट इंटेंस कलर से दबन इंटेंस कलर हम कोड पाइबा इन पाई टू पाई 3 जो ट्रांजिशन हला पाई 2 टू पाई 3 स्टार जो ट्रांजिशन हला सेटा हला कोन सबुटु इंटेंस कलर हमको दब तो नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन हम कोन हम इन पाई स्टार ट्रांजिशन पाऊ हला नॉर्मल जो देखिबा एल्डिहाइड कीटोन ने मेन पाई स्टार पाऊ नियरली 275 200 300 भीतर हमर एन पाई स्टार ट्रांजिशन मिले बट दैट इज कोन लेस इंटेंस द इंटेंसिटी बहुत कम थाए तर लैम्बडा मैक्स ई मैक्स देखिबा जो एक्सटेंशन कोएफिशिएंट ई मैक्स देखिबा 10 रु 100 भीतर रहइबो बट नॉर्मल माने इंटेंस ताकर 10000 5000 ए भरे आसे ई मैक्स जो एक्सटेंशन कोएफिशिएंट थाए तो या बट एल्डिहाइड कीटोन ने ऑल्दो देखो वेवलेंथ के तो अधिक आउची 275 रु 300 भीतर आउची वेवलेंथ लॉन्गर हे गला बट तार इंटेंसिटी से अनुसार अधिक होउनी तार इंटेंसिटी केते होउची मात्र रहउची हमरो somehow रहउची 10 to 100 भीतर रहउची जो एक्सटेंशन कोएफिशिएंट है तो इंटेंसिटी कम रहउची बट वेवलेंथ अधिक रहउची ओके तो जदि हमें सपोज कार्बोनिल कंपाउंड हमें ऑब्जोक्रम सब्स्टिट्यूट हे दियो जेंति हमर कोन ईस्टर अमाइड ओके ईस्टर अमाइड ऑब्जोक्रम सब्स्टिट्यूट कर दबा से केस देखाबो पाई स्टार एनर्जी कोन भी पहले पड़ी छै तो ऑब्जोक्रम गोटे हमें रिप्लेस लागि जीव लागि ईस्टर गैस लागि ओआर लागि जाउची एनएस2 कोन होउची एनएस2 गोटे ग्रुप लागला जोडा हला कोन ऑब्जोक्रम लागि गला अमाइड रे तो से माने कोन करी से माने पाई स्टार एनर्जी बढ़ाई देले तो पाई स्टार एनर्जी बढ़ाई देले हमर कोन हो हमर जो एन पाई स्टार ता कम एनर्जी रे होतला सेटा अधिक एनर्जी दरकार हला तो एनर्जी अधिक हला माने कोन वेवलेंथ कमी जीवो सो इन पर्टिकुलरली देखिबा एसिड आ अमाइड ए ईस्टर अमाइड केस रे जो आसीबो तार
वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन आसो केते 200 ରୁ 215 नानोमीटर रहइबो तो 275 300 जो पिक तमर आसिला तो तमे क्लियर हे जो जेटा एल्डिहाइड और कीटोन बट एटा एसिड की स्टर एमएन रहंती हला पर्टिकुलर स्टर आ तो जमा हेबेनी स्टर आमेर जमा होई हला कारण 275 300 आसला माने तमे क्लियर हे जिवो इट इज आइदर एल्डिहाइड और कीटोन आंको भितर कोटा उठे हेतिबो कारण ऑक्सोक्रोम ग्रुप लागला माने से 5 स्टार एनर्जी बढ़े दोची जेतु 5 स्टार एनर्जी बढ़े देला लेकिन 5 स्टार गैप भी बढ़ी गला जते गैप बढ़िबो से अधिक कोन हो एनर्जी जते अधिक एनर्जी होबो वेवलेंथ सेते कम होबो जते वेवलेंथ सॉरी अधिक वेवलेंथ कम जीवो सेति पय हमर देखिबा एसिड और अमाइड केस रे वेवलेंथ ऑफ आबुची केते आछी ऑब्जर्वेशन वेवलेंथ आछी 200 215 नानोमीटर आछी बट एल्डिहाइड कीटोन केस रे जोटी किछि ऑक्सोक्रोम नाही सेति हमर 275 रु 300 भीतर आछी तो 275 रु 300 भीतर यूवी स्पेक्ट्रा आछी माने तमे आइडिया तो मुंडू आसा दरकार एटा एल्डिहाइड और कीटोन ओके तो एटा हउची दिस इज द इफेक्ट तो जते कंजुगेशन हो तुम कम जते कंजुगेशन हो तुम एटा क्लियर हे गेलो जते हम कंजुगेशन बढ़ेबा सेते वेवलेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन रेड शिफ्ट हो लॉन्गर वेवलेंथ को जीवो क्लियर हेलो तो नेक्स्ट काई एटा ऑलरेडी हम डिस्कस कर सरेनी कंजुगेशन बढ़ले कोन होची होमर एनर्जी बढ़ुची लूमर एनर्जी कम होची सेति पई जते हम कंजुगेशन बढ़ी बढ़ी चलीबा सेते वेवलेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन लॉन्गर वेवलेंथ हो लॉन्गर बट टुवर्ड्स रेड एंड को शिफ्ट करिवो ना ऑब्जर्वेशन वेवलेंथ रेड एंड को शिफ्ट करिवो एंड फाइनली देन क्वेश्चन आवर क्वेश्चन आसीबो इज देयर इज एन इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट रो किछि इफेक्ट रहिबो कि ए केस रे हमें देखले फास्ट कंजुगेट डाइन केस रे किछि इफेक्ट रहिलानी बट इन केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज देयर इज एन इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट रो किछि इफेक्ट रहिबो कि आंसर दियो सॉल्वेंट रो किछि इफेक्ट रहिबो कि नाही इन केस ऑफ योर conjugated diene sorry in case of carbonyl compounds or alpha beta unsaturated compounds ए केस रे किछि इफेक्ट रहिबो कि नाही कहरा सॉल्वेंट रो सॉल्वेंट रो कोन इफेक्ट रहिबो ऑन एन बाय सॉरी ऑन कार्बोनिल कंपाउंड रहिबो कोन रहिबो को सॉल्वेंट पे पढ़ाई तम हला सॉल्वेंट पे पढ़िछ आ को सॉल्वेंट रहिबो पर्टिकुलर को सॉल्वेंट रहिबो पुन को सॉल्वेंट रहिबो देखिए नहीं सॉल्वेंट रहिबो पुन को सॉल्वेंट माने पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट इफेक्ट कोन रहिबो आ नॉन पोलर सॉल्वेंट इफेक्ट कोन रहिबो को polar solvent ro effect ko raibo and non-polar solvent ro effect ko raibo effect raibo that is correct solvent will have effect and effect ko hobo okay polar solvent less energy acha okay first non-polar solvent ro kichi effect raibo nahi only polar solvent will have impact on absorption wavelength of absorption तो polar solvent कौन इफेक्ट रहिबो मते को polar solvent कौन इफेक्ट रहिबो को देखो पोलर सॉल्वेंट लॉन्गर वेवलेंथ कहा पय हो देखिया पड़िबो डिपेंड करे जो सॉल्वेंट हम नबा से कहा को स्टेबलाइज करछ ओके इन केस ऑफ योर एन पास्टा टेंशन देखिबो से कोन करे एन पास्टा टेंशन रे से ग्राउंड स्टेट को ओके ग्राउंड स्टेट बा से जो जल्दी गोटे ग्रुप हला सपोज गोटे ग्रुप हमर ग्राउंड स्टेट रे कोन हुए ग्राउंड स्टेट रे मोर पोलर थाए देन एक्सेलेरेट स्टेट
से केस से कौन कर ग्राउंड स्टेट को पोलर सॉल्वेंट अधिका स्टेबलाइज कर दो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमर वाटर हो कि अमोनिया कि अमीन वाले सॉल्वेंट थिले ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଗ୍ରାउंड स्टेट को अधिका स्टेबलाइज कर देबे इन केस ऑफ कार्बोनेट कंपाउंड्स तो ग्राउंड स्टेट स्टेबलाइज हेले कोन हो ग्राउंड स्टेट स्टेबलाइज हेले हमर एनर्जी एन पाई स्टार जो हमर पर्टिकुलर जो कहले जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो का का भीतर हो ऑक्सीजन एटम भीतर हो तो ऑक्सीजन एटम पहुंच लोन पेयर सेठी अछि ऑक्सीजन एटम पाखरे तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल स्टेबलाइज हो बेसी तो एनर्जी कमी जीवो सो एन पास्ट एनर्जी कौन है जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एनर्जी कमिला एन पास्ट एनर्जी कौन है एन पास्ट एनर्जी बढ़ीगला तो एन पास्ट एनर्जी जेहेतु बढ़ी वेवलेंथ कमिबो सेतिपई पोलार सॉल्वेंट माने कोन करिवे पोलार सॉल्वेंट पर्टिकुलरली एन पास्ट और एन सिग्मा स्टार टेंशन जो होची हमर कार्बोनिल कंपाउंड केस रे पोलार सॉल्वेंट थिले से माने ग्राउंड स्टेट को अधिका स्टेबलाइज करबे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ग्राउंड स्टेट अधिका स्टेबल हे गले ताको एनर्जी गैपटा बढ़ी जीवो एन आ पाई स्टार की एन सिग्मा स्टार जो ऑर्बिटल दिटा अछि एनर्जी गैप बढ़ी जीवो एनर्जी गैप बढ़ी गले ऑब्जर्वेशन विल ऑकर एट शॉर्टर वेवलेंथ रे हो ओके और यू कैन से इट विल शिफ्ट बाथोटोमिक शिफ्ट शॉर्टर वेवलेंथ रे बाथोटोमिक शिफ्ट सो शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू शिफ्ट शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू शिफ्ट हो शॉर्टर वेवलेंथ मींस ब्लू शिफ्ट रे हो एंड जदि हमें पाई पाई स्टार थी इन केस पाई पाई स्टार टेंशन से कौन हुए पाई स्टार ऑर्बिटल टा मोर पोलर देन पाई ऑर्बिटल तो पाई स्टार ऑर्बिटल को अधिक स्टेबलाइज किए करिवो पाई स्टार ऑर्बिटल को अधिक स्टेबलाइज करे हमर पोलर सॉल्वेंट देन पाई ऑर्बिटल तो पाई स्टार ऑर्बिटल एनर्जी कमी जीवो तो पोलर सॉल्वेंट थिले पाई टू पाई स्टार जो थिला एनर्जी गैप कमिबो बट एन टू पाई स्टार एनर्जी गैप बढ़िबो सेतिपई एन पाई स्टार जो जेतिक वेवलेंथ रे ऑब्जर्व करूथबो इन एब्सेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट रे आउरी कम वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ रे ऑब्जर्व करिवो बट पाई पाई स्टार जेतिक वेवलेंथ रे ऑब्जर्व करूथबो आउरी अधिका वेवलेंथ रे ऑब्जर्व करिवो और यू कैन से द पाई पाई स्टार जो ट्रांजिशन टा होची that will shift or that will undergo red shift a polar undergo red shift a polar solvent रे पाई पाई स्टार ट्रांजिशन टा रेड शिफ्ट हेजिवो ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ पाई स्टार ऑर्बिटल और ड्यू टू लोअरिंग स्टार ओटा ऑर्बिटल स्टेबल केते हुए एनर्जी कमा जाए सो पाई स्टार ऑर्बिटल जो एनर्जी कमी जीवो पाई स्टार ऑर्बिटल ड्यू टू बॉन्डिंग विथ सॉल्वेंट मतलब पोलर सॉल्वेंट बॉन्ड कर देबे partial interaction करिवे they will stabilize or they will decrease the energy of pi star orbital as a result the energy gap between pi and pi star orbital will decrease so energy decrease कला माने wavelength बढ़िबो so wavelength बढ़ला माने they will undergo a red shift माने red shift हेबे longer wavelength shift longer wavelength हो जिवो बट एन pi star ट्रांजिशन जोटा कि longer wavelength होथबो से केस कोन ग्राउंड स्टेट अधिक स्टेबल हैला तो ग्राउंड स्टेट एई लेवल थरा एटा हैला ग्राउंड स्टेट एई चतळ हातटा ग्राउंड स्टेट जो लेवल अछि पोलर सॉल्वेंट थरा आउट स्टेबलाइज करबा आउट तळको पळे आसीबो तो ये स्टेबल हैला माने एनर्जी गैप कोन होला बढ़ी गला तो एनर्जी गैप बढ़ी गले एटा कोन हो इट विल अंडरगो ब्लू शिफ्ट ओके एटा ब्लू शिफ्ट हे जो वेवलेंथ कमी जिवो सो एटा होची इफेक्ट माने डाउट अछि पचारे विषय से विषय कारण डाउट अछि पचार देखि पारिबो गोटे सॉल्वेंट देखियो जो धर एसीटोन ता जोटा हमर हेक्सेन ने निया होची 280 नानोमीटर देखुची गोटे एसीटोन में नेले ता देखिबी 280 नानोमीटर देखुची एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इन केस इन हेक्सेन मो हेक्सेन सॉल्वेंट देखली मोर 280 नानोमीटर रे आसिला तार एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ बट जते वाटर नै जाउची तार एन पास्ट जो टेंशन आछला वाटर जो सॉल्वेंट हे जाउची दैट 264 हे जाउची 280 रु 264 हेगला नियरली 15 16 बा 16 नानोमीटर कमी गला आ 16 नानोमीटर से गला टुवर्ड्स ब्लू शिफ्ट शॉर्टर वेवलेंथ हैला ड्यू टू रीजन कौन ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ योर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हाट हाइड्रोजन बॉन्डिंग करि पारे इट इज आल्सो पोलर सॉल्वेंट सेति पई जेहेतु तार नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ला एनर्जी कमी जाउची तो एन पास्ट एनर्जी गैप टा बढ़ी गला एनर्जी बढ़ले वेवलेंथ कमियो जोटा 280 नानोमीटर होतला 264 नानोमीटर शिफ्ट हैला कमेला वेवलेंथ ओके तो कार कोन डाउट अछि पचार और एटी हमर सरी जीवो
तो तुम मैंने जो प्रोब्लेम मुझे देछि तुम मैंने प्रोब्लेम गुड़ा देख तुमको टाइम दूची मिनिमम 5-6 दिन टाइम नियो सबुदिन गोटे पीडीएफ देख तुमको 7टा पीडीएफ देछि गोटे वीक टाइम देली है 7टा पीडीएफ तुमको देछि 7टा पीडीएफ जो प्रोब्लेम अच्छी गोटे वीक तुम मैंने टाइम नियो गोटे वीक भितर तुम मैंने कौन कर माने कोटा कौन डाउट रहा मत बाहर करके सब समस्त एकाथरे गोटे तुम ग्रुप डिस्कस कर ग्रुप पोस्ट कर कहाँ कौन डाउट रहा से प्रोब्लेम गुड़ा मत देले मैं एकाथरे डिस्कस कर देबी सर थर्ड फिगर सेटा कौन शो करछ हां लास्ट फिगर जोटा अछि सेटा देखो जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम जो देखो आछि कंजुगेट डायन क्षेत्र जो वेवलेंथ रा आछि तर ऑब्जर्वेशन पीक टा केते बहुत बड़ पीक टा आछियो जो लास्ट थर्ड जो फिगर टा कोच कहबो से फिगर तुम शो करछ कोन जे कंजुगेशन होनी विदाउट कंजुगेशन देखिबा जिते कंजुगेशन जिते देखिबो कंजुगेशन लो पीक टा बहुत शार्प आसुची आउ इंटेंस कलर आसुची ता ऑब्जर्वेशन अधिक आसुची ओके बट इन नॉन जोटा हमर अछि अनकंजुगेटेड कार्बनिक कंपाउंड लो ऑब्जर्वेशन हो सेटी वेवलेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन कहबो वेवलेंथ रे हमर कम जाउची एटी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन नि आइची एनर्जी से नि आइ ना वेवलेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन अछि वेवलेंथ रा बहुत अधिक आसुची कोठी इन केस ऑफ योर कंजुगेटेड डाई वेवलेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन अधिक बट एनर्जी नेले एनर्जी कम कंजुगेशन हेले हम जानचंती गैप टा कमी जाउची गैप कमी गेल हाई वेवलेंथ आसुची ओके बट इन केस ऑफ योर अनकंजुगेटेड कम होची सेटी कमी जाउची तार इंटेंसिटी कम होची कारण सेटी एनर्जी टा बढ़ी जाउची इन केस ऑफ अनकंजुगेटेड कार्बन कंपाउंड सेटी जहाले भी सेटी योर वेवलेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लेस एटी अधिक आपको इन केस ऑफ कंजुगेटेड कार्बन कंपाउंड्स कौन हला डाउट तुम मास स्पेक्ट्रम अछि तो वैभव देखिबो थर्ड फिगर रे हमरो जत्ते कंजुगेशन होबो सेटे ऑब्जर्वेशन बा वेवलेंथ पीक टा इंटेंस अधिक आसीबो हाईली इंटेंस पीक आसी आ गोटे देखि परिबो कोन तार एनर्जी टा कमी जाउची वेवलेंथ रा अधिक आउची हाई वेवलेंथ हो देखो तुम पीक देखिबो दीटा पीक कंपेयर करो तुम जोटा हम देछि कार्बन कंपाउंड लास्ट जो पीक टा देछि देखो कंजुगेशन जोटा हेछि तार जो पीक देखो वेवलेंथ रा अधिक आछि लास्ट पूरा लास्ट जोटा टे ब्रॉड पीक टा आछि 300 350 जो पीक टा अछि अधिक ब्रॉड अछि आ अधिक एरिया से कवर करछि दैट मींस जेतिकी से नियरली जोटा अनकंजुगेटेड कार्बनिक कंपाउंड थिला 320 पाखा पे रहउथला जो कंजुगेशन हे गेला परे से 340 पाखा पे शिफ्ट करि जाइछि बट टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ रेड शिफ्ट हेछि जोटा कि 300 280 रु 320 भीतर थिला सेटा से 280 रु स्टार्ट हेछि बट 340 पाखा पे एंड हेछि दैट मींस 20 nanometer there is shift in absorption wavelength 20 nanometer shift is towards longer wavelength towards red shift due to conjugation पचरा मास स्पेक्ट्रा कोन डाउट लेसन ले तो पचरा सर एन पेंटन मास स्पेक्ट्रा 43 एनएक्सन 43 नो तो डाउट को पचरा देखो एन हेप्टेन नियो एन हेक्सेन जहा नियो समस्त पीक 43 आसीबो तान गोटे गोटे मिथाइल जदी समस्त पीक आसीबो तान गोटे गोटे CH3 धरो एन पेंटेन नियो एन पेंटेन को फार्मूला कोन रहतो C5H12 रूज फार्मूला तो 72 मॉलिक्यूलर पीक तो 72 पर नेक्स्ट गोटे 15 नहीं कार्बोकेट देखो बर्तन पे धर मु एन तम कथा अनुसार मु कोन नेली कार्बोकेट स्टेबिलिटी तो परे आसीबो फास्ट आके बाहर कर मॉलिक्यूलर आयन गुडा को आयन आसीबो को आयन आसो एन पेंटेन जो नबा फार्मूला कोन एन पेंटेन फार्मूला होची C5H12 तो 72 तर मास सेतर फास्ट गोटे यूनिट कोन CH3 डॉट पळेबो गोटे CH3 डॉट फ्री रेडिकल पळेले कोन पाइबो गोटे पाइबो एन ब्यूटाइल कार्बोकैटायन नहीं एन ब्यूटाइल कार्बोकैटायन पाइबो जार मास होची 57 तो देखो सेटा CH2 प्लस रहउची एन ब्यूटाइल कोन CH2 प्लस रहउची तो मु रिअरेंज कर देबी तो ता पाखर जो अच्छी CH2 ग्रुप गोटे हाइड्रोजन हम शिफ्ट कर देबी से CH2 ताले प्लस टा कोडी पळे आसी गोटे CH प्लस हे जिवो सेकेंडरी कार्बोकैटायन हे जिवो एंड वी नो सेकेंडरी कार्बन मोर स्टेबल तो सेति में से हम रिएक्ट कर तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन शो कर 57 अछि से थ्रू आ गोटे CH2 यूनिट 57 नु आ गोटे CH2 यूनिट पनि डॉट CH और तमे जो जदी गोटे इथाइल बाहर करबी n
पेंटेन मॉलिक्यूलर आयन रु जदि गोटे मु बाहर करबी इथेन सॉरी इथाइल फ्री रेडिकल एन पेंटेन इथाइल पळेला माने C2H5 पळेला रहिबो केते 72 रु 29 जीवो रहिबो सेई 43 स्टेबिलिटी देखिबा स्टेबिलिटी देखो बेसी कोन गोटे वाला तमरो सेकेंडरी ब्यूटेल वाला और कोन मोसिटी वाला गोटे आइसो ब्यूटेल आइसोप्रोपाइल ब्यूटेल कार अधिक जोटा मोस्ट स्टेबल हो दैट विल बी योर base peak having high intensity or highest intensity. Base peak means highest intensity. But your isopropyl जोटा अच्छी सेटा भी सेकेंडरी कार्बोकेट हेले भी स्टेबिलिटी टिके कम रही ओके से भले तुम से N2C डॉट पाइबो कोन इथाइल रेडिकल पाइबो जदि गोटे ब्यूटेल बाहर कर देलो पाइबो मिथाइल रेडिकल तो गोटे 15 पाइबो 29 गोटे पाइबो गोटे 43 पाइबो गोटे गोटे पाइबो गोटे 43 पाइबो गोटे 57 पाइबो गोटे 16 सॉरी गोटे 72 रे तो जनरली आयन परे मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन हैला स्पीडटा जीव के -15 एन ब्यू सही बढ़िया जदि गोटे एन पेंटेन गोटे बाहर कर देली इथाइल फ्रेड एबा एन पेंटेन जो अछि मॉलिक्यूलर आयन से दोटा बाहर कर को मिलिबो आइसोप्रोपाइल तापर देखो जदि गोटे एन प्रोपाइल फाइनल जदि मु एन बाहर कर रेडिकल तो फाइनल पाइबी मिथाइल काटा तो गोटे आगे बाहर करिवो मिथाइल रेडिकल तापर बाहर करिवो प्रोपाइल रेडिकल लास्ट को बाहर करिवो ब्यूटेल फ्रेड बाहर पाइबो ब्यूटेल कार्बोकेटायन ताको रियानेस कले मिलिबो आइसोब्यूटाइल तापर गोटे प्रोपाइल कार्बोकेटायन ताको रियानेस कले पाइबो कोन आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन एंड जो पाइबो इथाइल ताको H2 रिमूव कर देले हम इथिलीन कार्बोकेटायन पाइ जिवो एंड फाइनली तमे जो आ गोटे देरा क्लास ले मोस्ट प्रॉब्लम भी सर जिवो एंड तो सिलेबस सब कवर हे गेला जा तुम कोर्स थेले सो थैंक यू